नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। अनदर ईयर फॉर यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स पेपर एंड अनदर ईयर फॉर अ माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन पेपर। इस पर्टिकुलर ईयर के क्वेश्चन पेपर ने वापस से यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को अचंभित कर दिया है, जिसके अंदर यूपीएससी कहां से सवाल पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, किस मंशे से पूछ रहा है, एस्पिरेंट्स को कुछ ये सारी चीजें पता नहीं चल रही है। हाउएवर साथियों, जैसा कि मैं हमेशा से आपको बोलते आता हूं कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो बेसिक्स के बेसिस पे आप यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर को आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर ये जो आपके सामने पेपर दिख रहा है, ये सेट डी का पेपर है, जिसके अंदर हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में यूपीएससी जनरली 14 से 16 क्वेश्चंस जो हैं वो हिस्ट्री को एलोकेट करता था। हाउएवर इस पर्टिकुलर ईयर में सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 सवाल उसने हिस्ट्री को एलोकेट किया है। मतलब ये एक ड्रास्टिक रिडक्शन है यूपीएससी के अंदर। और ये 8 से 9 सवाल भी सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए नहीं है। हाउएवर इट इज फॉर एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर, ये सारे ही चारों सेगमेंट के लिए यूपीएससी ने सिर्फ 8 से 9 सवाल में सीमित कर दिए। और इन्हीं 8 से 9 सवालों को अगर मैं कैटेगराइज करूं इनटू हार्ड क्वेश्चंस एंड इजी क्वेश्चंस, सो मेजॉरिटी 85% ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं साथियों वो हार्ड क्वेश्चंस के अंदर कैटेगराइज होते हैं, वेयर एज इजी क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चंस होते हैं। और ये जो 15% के क्वेश्चंस हैं वो आपके बेसिक्स अगर आपके क्लियर हैं तो ये बेसिक्स से आप ये 15% ऑफ द क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हैं, जो कि आपके होने ही चाहिए। अगर ये भी आपके नहीं हो रहे हैं तो मतलब आपने समझ जाना है कि आपका बेसिक्स जो है वो थोड़ा डगमगाया हुआ है, जिसको आपको ब्रश अप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाउएवर ये जो 85% ऑफ द क्वेश्चंस है, ये ट्रस्ट मी मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स को ये तकलीफ आई रहेगी इन्हें सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यूपीएससी आसानी से कोई भी सवाल नहीं पूछता। जैसे कि मैं हमेशा से ही बोलते आ रहा हूं, यूपीएससी का सोर्स हमेशा क्या होता है, उसका पीवाईक्यू होता है। जो उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है उसी का एक स्टेप आगे लेके वो अगले साल के क्वेश्चन पेपर में पूछेगा। वही सेम चीज मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करूंगा। अब अगर हम हमारा पहला सवाल अगर हम लें तो यहां पर देखिए 13th क्वेश्चन में अपने 13th क्वेश्चन जो है वहां पर अगर अपने समझने की कोशिश करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भाषा। ओके, भाषा। नाउ दिस पर्टिकुलर पर्सन जो है ये एक कविकार थे, जिन्होंने बहुत सारे स्टोरीज एंड कविताएं इन्होंने लिखी हैं, काव्य। ओके, उस पर्टिकुलर टाइम में संस्कृत में काव्य कहा जाता था, दैट इज स्टोरीज वगैरह को जो लिखा जाता था। तो वो जो प्ले स्टोरी राइटिंग को प्ले राइट के हिसाब से भी देखा जाता था, जहां पर उन स्टोरीज को प्ले के माध्यम से दर्शाया दर्शाया जाता था। तो ये बात की जा रही है इन्हीं प्ले राइट्स की। सो काव्य अलंकारा है, नाट्य शास्त्र है, मध्यमा व्योग है एंड महाभाष्य है। अब यहाँ पर साथियों देखिए, इसको बहुत आसानी से किया जा सकता था, क्योंकि आपको पता है नाट्य शास्त्र लिखा किसने है, इट इज ऑल्सो द फिफ्थ वेदा, सो इट इज गोइंग टू बी द भारत। ठीक है, भरत मुनि ने ये लिखा है। इसके अलावा अगर हम महाभाष्य की बात करें तो आपको पता है कि ये लिटरेचर है, एंड दिस महाभाष्य इट हैज बीन रिटन बाय पतंजलि। ओके, पतंजलि's महाभाष्य। ऑलराइट। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें, सो ये वाला जो महाभाष्य है इट इज गोइंग टू बी अ ग्रामर बुक। ठीक है, ये एक ग्रामर का बुक पर्टिकुलर था महाभाष्य, संस्कृत ग्रामर का। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम यहाँ पर दो ऑप्शंस बचते हैं, एक तो है काव्य अलंकारा और दूसरा हो जाएगा माध्यमा व्योग। अब यहाँ पर काव्य काव्य अब यहाँ पर मेजॉरिटी एस्पिरेंट्स ने ए को टिक करा रहेगा, दैट इज बिकॉज प्ले राइट है एंड बिकॉज काव्य है। ऐसे करके एलिमिनेट करके कुछ तो भी दिमाग दौड़ाने की बात करी रहेगी। बट सी, यूपीएससी इज यूपीएससी। यूपीएससी जब भी कोई बहुत आसान सामने सामने दे दे, सिक्सर मारने वाला बॉल दे दे, तो हमेशा हर बॉल पे छक्का नहीं मारा जा सकता। सो उसी प्रकार से आपने यहाँ पर समझना है कि काव्य अलंकारा जो है इट वॉज रिटन बाय भमना। ठीक है, भमना ये भी एक प्ले राइट ही है। However, it is not written by Bhasha, it is written by Bhamana. Whereas Madhyama Vyog, this has been written by Bhasa. So ऐसे करके अब यहाँ पर मैं ये आपको क्यों बोल रहा हूँ, और ये जो है ना साथियों, ये कंटेंट ऑलरेडी मैंने आपको मेरे दूसरे इसके अंदर प्रोवाइड करा भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप ये कर सकते हो कि ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपको क्या दिया है, भाषा भाषा दिया। अब ये क्या, ये है क्या साथियों, दिस इज गोइंग टू बी द जो
हमने हमारे सीरीज के अंदर एंशंट इंडियन हिस्ट्री एंड मेडिवल एंड मॉडर्न इन सारों के हमने बुक निकाले थे। तो उन्हीं बुकों के अंदर ये मैंने पूरा फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए थे, और इन्हीं फैक्ट्स एंड फिगर्स के अंदर देयर इज दिस पर्टिकुलर वर्ड दैट इज द भाषा। अब भाषा जब यहाँ पर लिखा गया है तो भाषा के अंदर जब मैंने आपको यहाँ पर ये चीज दिया था भाषा, तो ये आपको ढूंढना था, भाषा के आगे भी आपको ढूंढना था कि भाई चलो इसके आगे भी और कुछ होगा क्या। मतलब भाषा ने यहाँ पर ये चीज लिखा है, भाषा के बारे में एक और यहाँ पर मैंने दिया था कि भाषा ने एक पर्टिकुलर वर्क लिखा है, बट वो वर्क के अलावा भी क्या यहाँ पर कुछ और इन्होंने करा हुआ है क्या। सो दिस इज व्हाट यू हैड टू एक्चुअली फाइंड आउट, ओके, कि व्हाट वर द अदर वर्क। सो दिस इज वन थिंग दैट यू हैड टू डू। सो ये इजीली आपका सॉल्वेबल था क्वेश्चन। इसके अलावा अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, संगा भुत्ती एंड इंडियन बुद्धिस्ट मंक। अगेन देखो बुद्धिज्म हमेशा से थीम रहा है यूपीएससी का, एंड फ्रॉम द प्रीवियस 5 years यूपीएससी हैज बीन कंसिस्टेंटली आस्किंग ऑन द महासंज्ञिका सेक्ट ऑफ द और द महायान सेक्ट ऑफ द Buddhism. Alright, so it has been asking on that. So Sanghabhuti, an Indian Buddhist monk who traveled to China at the end of the 4th century AD, was the author of a commentary on. अब यहाँ पर if you just look at this, so you are not going to find this particular thing anywhere. ठीक है, ये आपको कहीं पर भी, आपको बस ये कहाँ मिलने वाला है साथियों, यू आर गोइंग टू फाइंड इट इन द रेफरेंस बुक। और अगर आप रिसेंट यूपीएससी के कोई क्वेश्चंस आप उठाओगे, एंड इफ यू आर गोइंग टू लुक एट सच एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस, सो यूपीएससी जनरली ये सारे सवाल यूपीएससी पूछ कहाँ से रहा है, यूपीएससी हैज बीन आस्किंग इट फ्रॉम डॉक्टर उपिंदर सिंह। ठीक है, इनकी एक बुक है एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया की, वो पर्टिकुलर बुक से ही पूछा जा रहा है मेजरली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव आल्सो बीन आस्किंग इट फ्रॉम द पर्टिकुलर गवर्नमेंट सोर्सेज, दैट इज इग्नू के बुक्स। ठीक है, इग्नू के बुक्स। सो यहाँ पर अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज की बात करूं कि संघभूति ने कौन सा पर्टिकुलर टेक्स्ट इन्होंने ऑथर करा, सो सबसे पहले अगर हम एलिमिनेशन की बात करें तो ललित विस्तारा की अगर मैं बात कर रहा हूं तो साथियों देखिए ललित विस्तारा जो है इट इज अ टेक्स्ट फ्रॉम बीसी पीरियड। ठीक है, ये बहुत पहले का टेक्स्ट है जिसका एक्चुअल में time period no one knows. It is a very critical time period. Now, if someone is going to say that this has been compiled in the AD period, some other person is going to criticize it and tell it no, it has been compiled during the before Christ period. Okay, it is one of the earliest literatures in the Buddhism. इसके अलावा अगर हम प्रजना परमिता सूत्रा की बात करें, so it is a sutra. A sutra means it is basically a science. Okay, a science of what? Science of Buddhism. It is a science of Buddhism. So who is going to give the science of Buddhism? मतलब how is Buddhism to be practiced? मतलब ये background knowledge आपका थोड़ा एक होना चाहिए था when you are solving this particular type of questions. So sutra, it means science, and what actually is science? Who actually gives science? Can a particular normal person give a particular scientific thing? No, it has to be someone learned personality, na? Someone higher, at the higher level. So in Buddhism, who is at the most highest level? It is either going to be the Buddha, or it is either going to be the direct disciples of the Buddha. Okay, direct disciples of the Buddha. So Buddha and the direct disciples of the Buddha, they are also in the before Christ period. However, here they are asking about 4th century AD, no? So even this cannot be there. Okay, so even this is not there. Apart from that, when we talk about the Visuddhimagga, it is another Buddhist text. Okay, and it has been written by Ashvaghosha. All right, so when we talk about the Visuddhimagga, so it is, see, such particular things, it is very much easier. Okay, so Visuddhimagga, it has been written by Buddha Ghosha. Sorry, it has been written by Buddha Ghosha. All right, so this is there. So again, this is the negative answer, and the final answer is going to be the Sravastivada Vinaya. So the answer for the 14th one is going to be Sravastivada Vinaya. The next one, if we just talk about, it is going to be, the next question is, just let me look for a second. So here what we can see is that from those two questions, it is uniquely asked by the UPSC. Now see here, this is another question. With reference to ancient India, Gautam Buddha was generally known by which of the following epithets? Epithets, it basically means the titles.
ओके टाइटल्स की कौन से टाइटल से इनको जाना जाता था। सो अभी तक देखो एवरीवन यू आर वेरी मच अवेयर, गौतम बुद्ध को गौतमा भी बोला जाता था, ठीक है, गो भी बोला जाता था, गौतमा भी बोला जाता था, बुद्ध भी बोला जाता है, ठीक है, देन बुद्ध सख्या भी बोला जाता है। So all these are the various names for the Buddha. However, apart from that also there are various other names. For example, Tathagata. Then there is Sakya Muni. Okay. Now these words it has been already written. For example, if I just give you another evidence as to this. Okay, this is another thing that we had actually created for your revision purposes, and here I had already mentioned, just look at the names of the founder. Okay, this is the Jainism and this is the Buddhism. Now here if you just look at this thing, so names of the founder mein, here there is Gautami Putram, then there is Gautama, then there is Tathagata, then there is Buddha. So if I have given 4 names here, it was your duty that you actually needed to find out कि भाई दूसरे नाम कौन से हैं इनके. So उसके अंदर सक्या मुनि भी आ जाता है and then ताथागाता भी आ जाता है. हाँ, एंड यहाँ पर वर्धमान महावीरा का है. सो ये चीज आपको ढूंढना चाहिए था. ओके, सो हियर इफ आई टॉक द आंसर इज गोइंग टू बी बोथ सक्य मुनि एंड ताथागता. इसके अलावा भी और 5-6 और भी नाम है. ओके, सो दैट इज फॉर द गौतम बुद्ध. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नया पट्ट, अब नया पट्ट में क्या हो जाएगा, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पट्ट, सो पट्टा इट इज जनरली अ पाली वर्ड. Okay, patta it is generally a Pali word, and in Pali this is generally in association with commercialization, something in association with commercialization or son or something like that. ठीक है, commercialization या तो बेटा या उस particular context में there are variety of purpose, there are variety of meanings here. Now when we are talking about commercialization, so what does this word actually mean? New, naya means new and patta means commercialization. If you actually okay, in generally in my classes I do actually tell all these things. However, your new patta means new commercialization. Was Buddha anytime commercial? Was Lord Buddha commercial in nature or what? No, he never promoted commercialization. So that is where we actually need to understand. Okay, so that is one thing in the context of the Pali aspect. But when we talk about this in some other language, so the meaning it is going to change. Okay, the meaning it is changing here. So do not, if I am telling that this means commercial in this particular context, do not understand it as the meaning in some another language. You need to understand that with the language the meaning it is also going to change. However, when we are talking about Naya Patta, the word Naya Patta, it is a title that is given to the Lord Mahavira. Okay, it is a title that is given to the Lord Mahavira when we talk about Naya Patta. So here the answer, it is majorly going to be only 2 and 3, and it is not going to be 1, because Naya Patta was the title that was given to Lord Mahavira. Mahavira, that is the great Lord, and here I had also shown you that he is also given the another titles, that is the Siddha, and he is also given Jinnah. Okay, Siddha and Jinnah. So all these things, all these were the titles. The next one, if we talk, the next question, now see this is a mapping based question guys. Okay, so यहाँ पर अगर हम मैपिंग की बात करें तो ये जो मैपिंग है, ये मैपिंग आपसे पूछा कहाँ से गया है, जैसे मैंने आपको बोला ये बेसिक्स है. ठीक है, बेसिक्स, अगर आप ये सवाल आपके बेसिक्स से होने चाहिए थे, ये आपके इजियर क्वेश्चंस में से आते हैं. ये वाला जो है, ये वाला भी आपका जो है ना, ये इजियर क्वेश्चन में से आता है. वेरएज अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चंस की बात करूं तो इफ यू जस्ट लुक अप, सो योर ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये दोनों क्वेश्चन दे आर इन दी टफ क्वेश्चंस. ओके, दे आर इन दी टफ क्वेश्चंस, वेरएज नीचे वाले क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े इजी क्वेश्चंस में आ जाते हैं. इफ यू टॉक अबाउट दिस बेसिक क्वेश्चन ऑफ मैपिंग, ओके, ये आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएगा. सो हियर द फर्स्ट ऑप्शन दैट वी लुक एट इज चंद्रखेटुगढ़. चंद्रखेटुगढ़ यहाँ पर इट इज अ ट्रेडिंग पोर्ट टाउन. ओके, हाउएवर चंद्रखेटुगढ़ अगर आप मैप खोल के देखेंगे तो चंद्रखेटुगढ़ ओडिशा में नहीं आता है, ये वेस्ट बंगाल के अंदर आता है. ये बंगाल का जो डेल्टा है ना, उस डेल्टा के अंदर चंद्रखेटुगढ़ आता है. सो द फर्स्ट ऑप्शन इटसेल्फ इज रॉन्ग. सो इफ वी एलिमिनेट द फर्स्ट ऑप्शन, ऑटोमेटिकली ये 1 and 2 एलिमिनेट हो जाएगा एंड 1 and 4 भी एलिमिनेट हो जाएगा. सो बच गए सिर्फ 2 and 3 and 3 and 4. तो यहाँ से अपने को क्या पता चल रहा है कि भाई 3 तो कंफर्म हो रहा है. अब जब 3 कंफर्म हो रहा है सो 2 और 4 में अपने को देखना है. सो मतलब 3 तो करेक्ट है भाई. ओके, एंड फर्स्ट रॉन्ग है. सो अब 2 and 4 देखना है.
अब 2 and 4 की अगर हम बात करें, इनम गांव यू whenever you were doing the stone ages you have many a times read about इनम गांव, that इनम गांव it is in Maharashtra and it is a part of the stone ages. ठीक है, ये यहाँ पर है ना एक ऑर्वे कल्चर करके होता था. ऑर्वे मतलब क्या हो गया कि इट इज अ चैल्कोलिथिक टाइप ऑफ कल्चर. सो ऑर्वे कल्चर है मतलब चैल्कोलिथिक कल्चर है, तो मतलब चैल्कोलिथिक साइट होगा. ठीक है, सो दिस इज वन, ये इसका प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड वाला सही होगा. ठीक है, वेरएज द फोर्थ वन इफ वी टॉक सलीहुंडम, सलीहुंडम अगर आपने देखें, अगर आपने मैप खोल के देखेंगे तो सलीहुंडम ये सिटीज इन आंध्र प्रदेश, मतलब ये वाला जो एस्पेक्ट है, यहाँ पर कर्नाटका हो गया, यहाँ पर केरला हो गया, यहाँ पर तमिलनाडु हो गया एंड यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पर तेलंगाना हो गया. अब अगर हम सलीहुंडम की बात करें तो सलीहुंडम यस इट इज हियर इन द आंध्र प्रदेश एरिया. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आंध्र प्रदेश एरिया, यहाँ पर अब पॉइंट ये है कि दे आर टेलिंग दैट इट इज अ रॉक कट केव श्राइन इज देयर. Okay, so if you look at the Salihundam area, Salihundam it has recently been in the news for the aspect of the Buddhist shrines. Okay, Buddhist shrines. Now यहाँ पर Buddhist shrines की अगर मैं बात करूँ, so Buddhist shrines में वहाँ पर हो जाएंगे विहारा हो जाएंगे. Then apart from that, there is going to be the monasteries and the viharas. They are the residential places. Then then there is the chaityas or the mahachaityas. All these things are there. Okay, so now these viharas and all these things, if you even look at from the geographical point of view, rock cut caves, they were majorly prominent in which side of the peninsula? They are going to be prominent in the western side of the peninsula, right? The Maharashtra and the Karnataka belt, and not in the Andhra Pradesh belt. Why? Because here the eastern Ghats, they are not that very much continuous in nature. Okay, so इतना ज़्यादा rock cut cave shrines यहाँ पर आपको पाए नहीं जाएंगे in the eastern belt. Here you are going to be finding structures. Okay, so बस if rock cut cave shrines के बदले if they have told that archaeological structures, Buddhist archaeological structures, so शायद यहाँ पर हम इसको सही समझ सकते थे. However ये चीज यहाँ पर सही नहीं है. So यहाँ पर this thing is wrong. That is why the fourth statement becomes wrong. And यहाँ पर the second statement becomes correct. So if we look at the answer is going to be 2 and 3. Apart from that, if we look at the 36th question, guys, so here a very beautiful question again and a very easy question. UPSC ने previous year ये पूछा था कि विजयनगर के कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने एक डैम बनाया था. And this year they are asking that in the medieval India, which Vijayanagar ruler gave permission, they did not give it specifically Vijayanagar. So who among the following rulers of medieval India gave permission to the Portuguese to build a fort at Bhatkal? Okay, now where is Bhatkal? Bhatkal, it is going to be located in the area of Karnataka. Okay, Bhatkal, it is located in the area of Karnataka. All right. So here when we are talking, so let me just tell you, when here they are talking, so they have given 4 options to us. So if we just talk on this particular aspect, so let us just understand, when did the Portuguese actually come to India? They came to India in 1498, and if you look at the chronology of the Portuguese, they are going to firstly go to Calicut, then Kannur, the Calicut, the Kannore, the Cochin, and then they are going to go to the southern belt and all those areas, okay, Machilipatnam and all, then they are going to go later. So initially they were near the port areas, okay, and the first area that they conquered was in 1510 AD. Alright, that was the first, their foremost area. Now after that foremost area, here they started construction of forts and all. So during this, so we have this tentative time period of 1410 and all those things. So we just need to understand that who were the people during this particular time period. So one is the Krishna Dev Raya, in the options. Another they are giving is the Narsimha Suluva, then there is the Muhammad Shah, and then there is going to be the Yusuf Adil Shah. So here if we talk, so Adil Shah, he belongs to the Adil Shahi dynasty, that is after the disintegration of the Bahmanid. So there is going to be Adil Shahi, he is during the time period of 1450 to 1510. Then Muhammad Shah III, he is also in that particular area, however he is in the eastern India. Okay, Muhammad Shah, he is in the eastern India. Narsimha Suluva, okay, Suluva, that is the 4 dynasties of the Vijayanagar, Sangama, Suluva, Tuluva, Eravidu.
Okay, so Krishna Devaraya, he belongs to the Tuluva dynasty, whereas Narasimha Suluva belongs to the Suluva dynasty. Okay, prior to Narasimha Suluva. So here, even if you had to eliminate it, so obviously, as you know, UPSC, what will it want? UPSC, it would always want to promote the good people in the ancient Indian history. Although a majority of the people are good only, but they would want to promote certain personalities, right? And UPSC का सबसे hot favorite हमेशा कौन रहता है? It is going to be the Krishna Devaraya. ओके सो अब जनरली अगर आप ऐसे तुक्के या ऐसे जस्टिफाइड गेसेस पे जाएं या यूपीएससी के ट्रेंड्स को एनालाइज करते हुए जाएं सो द आंसर इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्ण देव राय एंड द आंसर इज राइट द कृष्ण देव राय इज ओनली द आंसर लेकिन अगर हम एलिमिनेट करते चले ना तो भटकाल कहाँ पर आता है भटकाल कर्नाटका वाले एरिया के अंदर आता है अगर थोड़ा सा अगर आपने डीपर एनालिसिस किया होगा ठीक है तो नरसिम्हा सुलवा के टाइम पे इतना ज्यादा जो नरसिम्हा सुलवा के टाइम पे इतना ज्यादा पोर्तुगीज का एस्पेक्ट था ही नहीं कभी इंडिया के अंदर ओके सो नरसिम्हा सुलवा ही वाज इनिशियल टू द तुलुवा dynasty so the Portuguese weren't there okay during majorly the time period however when we talk about the Muhammad Shah III के टाइम पे he was majorly in the eastern India he was ruling and आदिल शाह भी ईस्टर्न इंडिया वाले बेल्ट में ही रूल कर रहे थे अगर if I am just making a map of the Vijayanagar and the Bahamani so Bahamani it is going to be up here whereas Vijayanagar it is majorly going to be in this particular area this is Vijayanagar and Bhatkal is here okay so Bhatkal it will be majorly अगर हम eliminate करने की भी बात करें so Bhatkal it is majorly in association with whose area okay these two are going to be the Islamic areas these two are going to be the Hindu areas okay so here the Bahamani so these two the Muhammad Shah and Yusuf Shah they are going to be in association with the eastern India whereas when we are talking about Krishna Deva Raya and the Narasimha Solva they are going to be associated with the western India so the majority answer it is going to be revolving around these two people only however from these two also there is going to be the Krishna Deva Raya okay so UPSC ने just एक step आगे करके पूछ लिया इस particular year में भी on the the Vijayanagar Empire the next if we talk with reference to the revenue collection by the Cornwallis, consider the following statements. Okay, under the revenue settlement. Now see guys, revenue settlement UPSC ने nearly मेरे हिसाब से 2018 या 2019 में उन्होंने सवाल पूछा था अपना revenue settlements के ऊपर ही and उसी के अंदर ही रयतवारी settlements के ऊपर. So, under the रयतवारी settlement of revenue collection, the peasants were exempted from the revenue payment in cash in case of bad harvest or natural calamities. Okay, under the permanent settlement in Bengal, if the zamindar failed to pay his revenues to the state on or before the fixed date, he would be removed from his जमींदारी राइट्स ओके सो अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें तो साथियों देखिए यूपीएससी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने नियरली 3 अलग अलग तरीके के उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट्स लाए थे एक था परमानेंट सेटलमेंट दैट इज जमींदारी दूसरा था रयतवारी एंड तीसरा था महलवारी नाउ व्हाट डू वी नो इज दैट ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे हैड सर्टेन प्रोज एंड सर्टेन कॉन्स मेजॉरिटी ऑफ देयर रेवेन्यू सेटलमेंट्स ऑफ द ब्रिटिशर्स दे हैड मेजरली कॉन्स अब जाहिर सी बात है अगर ब्रिटिशर्स कोई रेवेन्यू सेटलमेंट ला रहे हैं सो इट इज नॉट गोइंग टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडियंस ओके इट इज मेजरली गोइंग टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिशर्स ओके एंड यहाँ पर अगर आज की if we are talking about the governments in the modern day time period whenever there is any bad harvest or natural calamities obviously the governments they are giving certain reprieve to the farmers okay certain relaxations देते लेकिन क्या कभी ब्रिटिश इंडियंस को रिलैक्सेशन देगी क्या ऑब्वियसली नहीं देने वाली है ना सो जाहिर सी बात है रयतवारी सेटलमेंट के अंदर भी दिस इज अ पॉजिटिव फीचर दैट ये स्टेटमेंट के अंदर है कि जब भी बैड हार्वेस्ट और नेचुरल कैलामिटीज होगा रेवेन्यू पेमेंट से एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा जाहिर सी बात है क्यों अगर एग्जेम्प्ट कर देंगे तो अंग्रेजों को उनका पैसा थोड़ी मिलने वाला है एंड द ब्रिटिशर्स वुड नेवर वांट दैट सो दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ इज कॉन्ट्रास्टिंग ओके इट इज इन कॉन्ट्रारी टू द नेचर ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड यूपीएससी यहाँ पर ये चीज पे खेलता है okay so this is what we actually needed to understand that would the UPSC would promote
a positive side of the Britishers, or would the UPSC create awareness about the ills that had a negative effect on the Indian society because of the British rule? Okay, obviously वो ill को ही promote करेगा ना, awareness create करेगा. Okay, so that people get to know. So the first statement itself, it is going to be wrong, that no, they were not exempted. Okay, they were not exempted, yet they were taken under the permanent settlement. Okay, when we talk about the second statement, yes, देखिए जमींदारी जो परमानेंट सेटलमेंट है इन 1791, ओके, क्या बोला गया था कि इफ द जमींदार, अगर वो अपने if the date is first, if the date is 31st of the month on which the money has to be paid, if the zamindar paid it on first, yet his zamindari rights, it would be forfeited. Okay, it would be taken, forfeited हो जाएगा वो. Okay, so that is, आप लेट भी नहीं कर सकते थे. ओके, एंड आपको जल्दी ही भरना पड़ रहा था. अगर आपने ये नहीं किया तो आपका जमींदारी राइट्स आपसे छीन लिया जाएगा. सो दैट इज व्हाट इट इज बीइंग सेड. अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, इफ जमींदार फेल टू पे हिज रेवेन्यू टू द स्टेट on or before the fixed date, he would be removed from his zamindari. Okay, if he failed to pay on और बिफोर द फिक्स्ड डेट, तब जाहिर सी बात है उसकी जमींदारी ले ली जाएगी, और वही मैंने अभी जस्ट आपको बोला. ओके, सो द सेकंड स्टेटमेंट, इट इज गोइंग टू बी राइट. सो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर इज गोइंग टू बी, इट इज बी. ऑलराइट, द नेक्स्ट वन, इफ वी टॉक, consider the following statements. There are no parables in the Upanishad, and Upanishads were composed earlier than the Puranas. Okay, so if we talk about the first statement, there are no parables. Parables मतलब क्या है? It is basically like a storyline. Okay, means basically it is didactry in nature. Didactry in nature मतलब यार इससे कुछ तो भी सीखा जाता है, मतलब स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ तो भी सिखाया जाता है. जैसे जाटकास कैसे हैं? जाटकास, okay, they are didactic in nature, na? So from the storyline. So similarly, when we are talking about Upanishads, what were Upanishads? That is the philosophical knowledge that the students received in the Gurukul when they sat near the feet of their teachers, of their gurus, and they got the philosophy. Whenever a teacher teaches, they are going to give certain context through a story so that the student can grasp the context much more easily. Okay, so telling this that there are no parables in Upanishad, it is a very extreme statement. Okay, भाई जाहिर सी बात है, हमारे पास 108 से ज्यादा उपनिषद है, और उनमें से किसी ना किसी में तो एक ना एक पैराबल तो होगा ही ना. तो जाहिर सी बात है, इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीम स्टेटमेंट. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. When we look at the second one, Upanishads were composed earlier than the Puranas. Yes, obviously Puranas जो हैं वो nearly 3rd century BC के अंदर बने. Whereas Upanishad की जब हम बात कर रहे हैं, so Upanishads they were majorly composed at the end of the Vedic period. इसीलिए तो उपनिषद को एंड ऑफ द वेदास भी तो बोला जाता है ना. एंड ऑफ द वैदिक पीरियड कब होता है? ड्यूरिंग द 600 BC. लेकिन उपनिषद दे हैड बीन स्टार्टेड, उनका बनावट जो है इट हैड स्टार्टेड फ्रॉम द लेटर वैदिक पीरियड इटसेल्फ ओनली. ओके, it was started to be making in the process of composition, उसका पहले से ही चलते आ रहा था ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज. All right, so yes, the second statement, it is going to be right, and here the answer, it is only going to be B. This is another one. And when we look at the last question for the history, and this is going to be the concluding one, that which one of the following was the latest inclusion in the intangible cultural heritage site of UNESCO? The most easiest question and the current affairs based question. ठीक है, ये आपको आना ही चाहिए था, अगर नहीं आएगा तो दिक्कत में है. All right, so the answer for this I'll not elaborate it. Okay, the answer for this, it is going to be Garba. Why? Because ये बहुत ज़्यादा news में भी था. Okay, and in my lectures, whenever we in my Samadhan series, I had specifically told you, when we are talking about current affairs, majorly focus on the Gujarat aspect. Okay, I had already told you that, and here that is the aspect that has been asked here. So a very easy question once again. So अगर इन सब क्वेश्चन में से बात करूं, so 8 से 9 सवाल में से 3 से 4 सवाल हम आसानी से सॉल्व कर सकते थे, whereas बाकी के थोड़े टफ थे. ओके, जिसको सॉल्व किया जा सकता था थोड़ा बहुत दिमाग लगा के. ऑलराइट, हाउएवर ये जो सारे सवाल है साथियों, ये आपको बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद आप बहुत आसानी से कर सकते हैं. हाउएवर
यहाँ पर शायद इस साल सवाल कम पूछे हैं यूपीएससी ने, विच कैन बी रिवर्स्ड इन द नेक्स्ट ईयर, एंड अगले साल और ज्यादा सवाल ये पूछ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट. So for this particular session only this much, and every one of you who will be watching the session, okay, even after your CSAT paper, so very all the best to you, all of you people. And I would like to tell to all of you people that आपने prelims दिया है, आपने सबसे पहला यही जोश वाला काम किया, that you had the courage to give the prelims, okay, and you will pass out with flying colors, okay. Just have hope and faith in yourself, and you will clear the examinations, all right. And be prepared for the mains. Why? Because UPSC will ask much more tougher questions when we talk in comparison in the context of history, okay, in the mains examinations. So mains के लिए हम बेशक बैठे हुए हैं. We will guide you in whatever way it is possible for us to guide you, okay, and the updates will be shared with you on the various online platforms, through the online platforms. So with this, I thank every one of you for watching this particular session. Thank you, and all the very best for your future exams.